Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNOU. Welcome to session 10 of Solved Questions Discussion of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective. So let's start with the first objective question of the session, that is, India needs about blank percentage of total area under forest to meet the ecological and economic needs. So देखो, we do have a national forest policy जो आपकी आई थी in 1988. According to national forest policy, so हमारी इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए हमारी कंट्री का एटलीस्ट 33% ऑफ एरिया शुड बी कवर्ड अंडर फॉरेस्ट. ठीक है, सो ऑप्शन थे आपके पास 50, 25, 40, 33. सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू National Forest Policy NFP 1988 should be 33. Clear? Question number 2. Which of the following animals excrete very concentrated urine? So options are camel, garden lizard, nocturnal rodent or snake. See, जो आपका camel है, camel can survive for several days without water. So उसका एक तरीका कि वो पानी को कंजर्व करके रखे वो क्या है कि वो यूरिन जो उसका है दैट इज कंसंट्रेटेड. सो इट camel excrete concentrated urine in order to save the water so that camel can survive for several days without water. So correct answer is camel. Moving on to the third question. The attitude which assigns significantly greater value to human being than any other non-human organism is known as. So उस point of view को हम क्या कहते हैं, उस attitude को हम क्या कहते हैं जिसमें we are giving greater importance to human than other organism. So first is stewardship. Stewardship is basically taking care of something or supervising something. So that is stewardship. Anthropocentrism. Anthropocentrism is basically where human is at the center and others are less important. So anthropocentrism means where we are giving more importance to the human than any other creature of the nature. So biocentrism. Biocentrism means when we are giving like every organism, other organism, जब हम organisms को ज़्यादा importance देते हैं, that is biocentrism. Ecofeminism. Ecofeminism is basically the relation between women and the ecosystem. That is ecofeminism. Clear? So the attitude which assigns significantly greater value to human being than any other non-human organism, it is anthropocentrism. So जो जिसमें हम human को center में रखते हैं and other organisms हमारे लिए कम matter करते हैं. So correct answer is 2. Question number 4. Which one of the following is not an ENVIS center? ENVIS is Environment Information System. So कौन सा ENVIS center नहीं है, that you have to tell. देखो ENVIS center जो है, it is a project जो कि आपका Ministry of Environment, Forest and Climate Change का project है. So it is a ministry, MOEFCCC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change का project है. So why ENVIS center? ENVIS center are created like to analyze, to collect the information, to analyze the information and to spread the information about environment. ठीक है, so उसके लिए we do have ENVIS center. So आपको बताना है इनमें से कौन सा ENVIS center नहीं है. Options are National Institute of Occupational Health Ahmedabad. This is one of the ENVIS center. Tata Institute of Fundamental Research Mumbai. This is not ENVIS center. ठीक है, this is research center. Society for Development Alternative New Delhi. This is also ENVIS center. Industrial Toxicology Research Center Lucknow. This is also ENVIS center. So ENVIS center are the project under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. जिससे हमें क्यों ये प्रोजेक्ट क्यों है, ENVIS सेंटर क्यों है, ताकि हमें एनवायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो पता चलती रहे, तब हम उसको टाइमली एनालाइज कर पाए और उसको हम स्प्रेड कर पाए. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई. इट इज नॉट एन ENVIS सेंटर. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. MPN टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट.
देखो एमपीएन क्या है, इट इज मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ठीक है। सो एमपीएम टेस्ट इज मोस्ट प्रोबेबल नंबर. इट इज बेसिकली टू डिटेक्ट द कॉलीफॉर्म्स और ई कोलाई इन द वाटर, ठीक है। आपके पर यूनिट वॉल्यूम वाटर में कितना ई कोलाई है उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, एमपीएन टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल नंबर. बेसिकली इट इज स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट for the of the number of E. coli or coliform in per unit volume of water. So options थे आपके पास E. coli, Shigella boydii, Vibrio cholerae or all of above. But correct answer is E. coli. So MPN is basically for E. coli or coliform. See आपका जो पानी है E. coli की अगर हम बात करें, let's discuss E. coli first है ना. So more थोड़ा सा उसको और डिस्कस करते हैं. E. coli की there are thousands of species. So majorly they are good and they are bad also. So good जो E. coli हैं, they are in our gut, they are in our intestine. So अगर हमारी बॉडी के अंदर E. coli हैं, it is a sign that we are healthy. But वही E. coli ह्यूमन के फीकल मटेरियल में भी है. So हमारे पानी में, पीने के पानी में स्पेशली we do not want E. coli. सिंगल E. coli भी आपके ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होना चाहिए. If there is E. coli, so that is an indicator your ड्रिंकिंग वाटर इज कंटेमिनेटेड, ठीक है. सो उससे डेफिनेटली फूड पॉइजनिंग होगी, ठीक है. सो फूड पॉइजनिंग इज वन ऑफ द सिम्टम कि आपके मतलब एक ई कोलाई आप अगर आपने आपका पानी के थ्रू या आपके फूड के थ्रू अगर ई कोलाई है तो फूड पॉइजनिंग इमीडिएट आपको मिलेगा, ठीक है, होएगा. सो एमपीएन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ई कोलाई. सो करेक्ट आंसर इज 1. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners and also helping our learners for exam through exam PDF. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for scaling your social and personal development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.